Welcome, ma'am. We can start. So it is streaming on YouTube also. Yeah. Yes. No Welcome, problem. ma'am. Can we start Please now? start now. Yeah. Okay, ma'am. Good afternoon, respected teachers and my dear student participants. Myself, Professor Sangeeta Jagya, Department of Accountancy, continuing with special lecture series on practical insight of accounting, organized by Seva Sadan's R.K.Talreja College, Department of Accountancy. Yesterday, we learned basics of accounting and financial reporting by Professor Nishika Ahuja. And today, being second day of lecture series, we will be learning Tally, a tool for accounting. So now I would like to introduce our eminent speaker, Professor Lakshmi Jeswani. Professor Lakshmi Jeswani, a postgraduate in computer science and commerce, having experience of 20 years teaching experience in R.K. Talreja College, and have published books on information technology for 11th and 12th science and commerce, and in charge of junior college IT department of R.K. Talreja College. Now let us learn Tally, a tool of accounting with Professor Lakshmi Jeswani. But before that, one announcement. All participants are requested to post their queries in chat box. The speaker will address all your questions at the end of the session. Thank you. Over to you, Lakshmi ma'am. Thank you, Sangeeta madam. Hello everyone, good afternoon. Let me share my screen. I hope my screen is visible properly. Yes, it is proper. Okay. So first of all, we'll be starting with a presentation. In between, we'll be learning about practical part of Tally also. Tally ERP 9. Accounts जो आप लोग starting से 11th onward सीखते हैं. सबसे पहले basics of accounting. Tally में हमें compulsory पता होना चाहिए. Tally actually is the most commonly accounting software which can be implemented in all the types of financial companies or organization, as it keeps track of all the day-to-day transactions of the business. एक software है ये जो आपके सारे different vouchers को handle करता है, like payments, receipts, sales, purchase, your credit notes, debit notes, everything. सबसे पहले आपको बुक कीपिंग के रूल्स पता होने चाहिए. दैट इज हाउ द अकाउंट्स वर्क. अकाउंट्स किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हो. दैट इज रिलेटेड टू पर्संस, ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टीज, योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द फर्म, योर स्टॉक्स एंड एवरीथिंग. दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. In classification of accounts, we are having two things: personal accounts, impersonal accounts. Personal में impersonal account में you are having real accounts and nominal accounts. अब इन तीनों के rules हमें properly पता होने चाहिए so that we can use it in software also. Personal account, that is account which contains the name of the person. Okay, maybe a natural or artificial. आपका dater, school का account, college का account, किसी firm का account, bank या company का account, all this comes under personal accounts. Real account, like any account of properties or assets, एक physical thing like cash, land and building, furniture, bank account, goodwill, and so on. Nominal account consists of all the expenses and losses and incomes and gains. Okay, like wages, salaries, discount allowed, discount received, commission, dividends, paid and received, etc. So what are the rules of debit and credit? Personal का rule जो हम लोग ने 11 से सीखा है. Debit the receiver, credit the giver. For example, vendor or a customer. For example, if I paid cash to some party, I've purchased goods from some person or a day अपना जिससे भी हम purchase करते हैं. If you have loan borrowed या loan returned to a specific person. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Like cash account, bank account, rent. जैसे furniture purchase किया,
मशीनरी सोल्ड किया, गुड्स परचेज किए, कार या कोई भी व्हीकल हम लोगों ने परचेज किया. आफ्टर दैट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स लाइक सैलरीज पेड, रेंट रिसीव, गुड्स डिस्ट्रॉयड, इन्वेस्टमेंट्स एंड सो ऑन. ये तीनों रूल्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रॉपरली. एंट्रीज आपको प्रॉपरली आनी चाहिए. सबसे पहले टैली का इंट्रोडक्शन, जैसे हम लोग ने पहले भी देखा था, टैली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग पैकेज व्हिच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली. एक यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है which provides a full control over every aspect of your business accounting. Then इसके features. अब टैली में we can maintain all the primary books like cash book and bank book. टैली में आप registers maintain कर सकते हैं like purchase, sales, journal ledgers and so on. Tally maintains all the statements of accounts like trial balance, profit and loss account, balance sheet, cash flow and funds flow. सारे आपके statements ready हो जाते हैं once you post the entries in respective accounts. Tally supports various languages and fonts. आप इसमें languages और fonts change कर सकते हो. जितने fonts और languages आप install करोगे, उतने languages आप use कर सकते हैं. By default, we can use English, जो हमारा normal software जिस तरह से चलता है. टैली में आप सारी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं. ऑल्सो टैली कैन प्रोवाइड अ रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर डेट. से फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2021, इस पर्टिकुलर डेट पे मैंने क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की है या क्या चीजें परफॉर्म की है वो मुझे देखना है. तो पर्टिकुलर डेट का भी आप व्यू कर सकते हैं या फॉर एनी रेंज ऑफ द डेट्स लाइक से फॉर एग्जांपल एक पीरियड 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये पीरियड में मैंने कितना ट्रांजैक्शंस किया है, ये सारा रेंज भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. मींस वी कैन व्यू द रिपोर्ट और द ट्रांजैक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट आल्सो एंड ऑन द रेंज ऑफ डेट्स आल्सो. ये कैसे करेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगी. टैली हैज अ फीचर लाइक इन्वेंटरी कंट्रोल एंड वैट कैलकुलेशन. ऑफ कोर्स इसमें जीएसटी भी आ जाएगा. बिल जनरेशन, जो भी इन्वेंटरी से रिलेटेड हम लोग जो भी चीजें करते हैं वो सब इसमें फीचर्स अवेलेबल है. Tally has an online help to solve any problem related to Tally. Online भी आप help ले सकते हैं whenever you are stuck in some problem. Tally has a very powerful facility of audit. Okay, इसमें बहुत सारी levels of securities भी होती हैं. In fact, आप general अपने companies को भी secure कर सकते हो by entering or saving it with a password. Once you are giving the password, unless and until आप वो password key in नहीं करते, तब तक आप कोई भी firm का account open नहीं कर सकते. These are the advantages of computerized accounting. एक तो स्पीड, सबसे पहली बात है इसका स्पीड. जैसे ही आप एक एंट्री पोस्ट कर देते हैं वो रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स में ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाती है. हर एक रिपोर्ट मुझे क्रिएट नहीं करना पड़ता. इट इज वेरी एक्यूरेट. ओके, इंस्टेंट एक्सेसिंग, जैसे मैंने बताया कि आपने जैसे एंट्री पोस्ट कर लिया, वंस आपने एक एंट्री पोस्ट कर ली उसके बाद डायरेक्टली आप रिपोर्ट में जाकर के वो सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट्स इंस्टेंटली व्यू कर सकते हो. मैन्युअली आप कैसे करते हैं, यू आर क्रिएटिंग प्रोफॉर्मास, यू आर क्रिएटिंग लेजर्स, देन यू आर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसमें आप एंट्रीज पोस्ट करते हैं, तब जाकर के आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो भी रिपोर्ट आप बनाना चाहते हो आपकी रेडी होती है. बट यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने रिपोर्ट एंट्री पोस्ट कर लिया, अकॉर्डिंगली आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है. इट इज हैविंग अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ सिक्योरिटी and staff motivation. Now this is our opening screen of Tally. Opening screen of Tally consists of various parts. इसको हम लोग practically भी देखेंगे. Starting में top में you are having title bar which indicates your version, that is which type of version you are using. Then after that your product information, top में जो Tally solutions लिखा हुआ आता है. Then this is called as a gateway of Tally, which is divided into two parts. The first part is list of selected companies and the another part is company info. Company info will give you various options related to your companies. ये हमारा सबसे पहला विंडो होता है जिसमें हम लोग अपनी सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं. Then this is your button panel. At present आपको ये button panel deactive दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे वैसे ये बटन पैनल जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसके फीचर्स हम लोग यूज कर पाते हैं. वो कैसे एक्टिव होंगे आगे वाले
एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली भी एक करके बताऊंगी, मैं टैली ओपन करूंगी, उसमें आपको दिखाते हैं. एंड दिस इज अवर कैलकुलेटर एरिया which we can use for calculation purpose. Now, before going on to the procedure, हम लोग लाइव देखते हैं कि किस तरह से कंपनी क्रिएट होता है. अब कंपनी क्या होता है, जैसे आप प्रोफॉर्मास बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले फॉर्म जनरेट करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में. अनलेस एंड अनटिल आप कंपनी क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. सो लेट्स सी प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकल्स हम लोग साइड बाय साइड करते जाएंगे सो दैट जो मैं थ्योरेटिकल बता रही हूँ आपको समझ में आए. आई एम स्विचिंग ऑन द विंडो. See, on the desktop you are having Tally ERP9 icon. ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, which is available on the net. You can install it. Double click on it. Tally में एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि जितना आप कीबोर्ड यूज करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, माउस कंपैरेटिवली हम कम यूज करते हैं, बट माउस क्लिक्स भी चलते हैं. फर्स्ट यू आर गेटिंग अ स्प्लैश स्क्रीन, दैट इज Tally power of simplicity indicating ERP9. Now here I am having multiple options like license operations. अगर मैं अपना लाइसेंस एक्टिव करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं लाइसेंस एक्टिव कर सकती हूँ. रीएक्टिव कर सकते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग लाइसेंस को. यू कैन टेक अ रेंटल लाइसेंस, यू कैन कॉन्फ़िगर द लाइसेंस. देन उसके बाद वर्क इन एजुकेशन मोड. हर एक अल्फाबेट के नीचे आप देखेंगे डैश दिख रहा है. जिस भी अल्फाबेट के नीचे सिंगल डैश है मींस इट इज प्रेस्ड बाय ऑल्ट. ऑल्ट के साथ आप उसको एक्टिव कर सकते हो. टैली में ऑल्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है. लाइक से फॉर एग्जांपल if I want to go in educational mode, तो I'll be pressing Alt W. जैसे ही आपने Alt W प्रेस किया, you are getting the opening screen है जो अभी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा था. This is my company info menu. This is my list of companies. This is my gateway of Tally, and this is my button panel. Now the button panel is not active because मेरा कोई भी company selected नहीं है. Okay, so see the options of company info. Select company means if you want to open the existing company. अब जैसे ही मैं सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जाऊंगी, यहाँ पे मुझे आ रहा है नो कंपनीज ऑन डिस्क, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी एक कंपनी क्रिएट नहीं किया. फॉर कमिंग ऑन द बैक स्क्रीन यू हैव टू प्रेस एस्केप फ्रॉम इट. एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप पीछे वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट कंपनी. नाउ यू कैन सी दैट हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट रेड में है. ओके, दीज आर द हॉट कीज. मींस इफ यू वांट टू सेलेक्ट और क्रिएट कंपनी आपको चूज करना है तो यू कैन डायरेक्टली प्रेस सी फ्रॉम द कीबोर्ड. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन यूज अप एंड डाउन एरो कीज टू नेविगेट. ओके, अप एरो की टू मूव अप and down arrow key to move down. Create company and you have to press enter. जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे टैली आपको कंपनी क्रिएशन सीन विंडो देता है. See, this is a company creation screen. यहाँ पे we have to fill all the details regarding the company. Now say for example मैं एक कंपनी क्रिएट करती हूँ R.K. या फॉर्म क्रिएट करते हैं R.K.T कॉलेज. ओके, मेलिंग नेम एज इट इज आ जाएगा जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म का नाम दिया होगा. दैट इज अ मेलिंग एड्रेस. उसके बाद यहाँ पे आई विल बी टाइपिंग द एड्रेस ऑफ द फॉर्म और द कंपनी. गो ऑन प्रेसिंग एंटर. Once you are done with the address part, you can press enter key. Now this will give you the list of countries over here, जिसमें by default India selected होता है. So we have to select the country from the list and press enter. Now state. अब हमें क्या करना है? State यहाँ से ढूंढना नहीं है. We have to select Maharashtra, right? So I'll be pressing M. जैसे ही M press करेंगे आप, तो M से related आपको सारे states आ जाएंगे. Then use down arrow key to select it. I'm telling you again. I think मैं थोड़ा fast चली गई. Address हम लोगों ने डाला. Country you have selected. In the same way you have to select the country also. Press enter. Now I have to select Maharashtra. So I'll be pressing M. M press करने के बाद press down arrow key. जैसे मैंने आपको बताया navigation keys टैली में बहुत important होती है. तो up arrow key और down arrow key आप use कर सकते हैं. Then pin code. Whatever the pin code you are having. Then उसके बाद आपका phone number. Whatever the phone number you are having. Mobile number. Fill the necessary details. Fax number. अगर फैक्स नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे. ओके, सपोज ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी फिल करना है.
fill all the details, website, then उसके बाद the most important thing is financial year. यहाँ से आपको properly financial year select करना है आपके firm का, जो भी आपको चाहिए. Basically date starts with 1/4 and the whatever year you want. Suppose I'm mentioning 2020. Okay. Then the next option is books beginning from. Books beginning from और financial year, इन दोनों में difference क्या होता है? Financial year तो आपका 1/4/2020 या जो भी year है आप select करोगे. Books beginning from means on which date actual transaction starts from. Generally हम लोग same रखते हैं. Generally, okay. But if you want to change, you can change. Suppose मेरी first transaction जून की है, तो मैं इसको 1/6 कर सकती हूँ. अगर मैं 1/4 भी रहने देना चाहूंगी तो नो प्रॉब्लम. प्रेस एंटर. यहाँ पे हम लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं फॉर्म के लिए. इफ यू वांट टू मेक इट सिक्योर, टैली वॉल्ट पासवर्ड. इट इज नॉट कंपल्सरी, सिक्योरिटी कंट्रोल आपको यूज करना है. इफ यू वांट टू यूज इट, वो पासवर्ड डालना है, रिपीट पासवर्ड डालना है. ऑफकोर्स अभी मेरा रिपीट पासवर्ड पे नहीं गया क्योंकि मैंने एंटर की प्रेस किया. नाउ इफ यू वांट टू यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो यहाँ पे यस करके आपको इनेबल करना है. तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू पुट द details. Suppose I don't want any security controls. Then basic currency symbol, rupees का symbol automatically आ जाएगा जिस टाइप का country आपने select किया होगा. Formal name INR. Okay. Suffix symbol to amount. अगर इसको yes करेंगे तो जो भी आप entries pass करेंगे उसके बाजू में आपका वो symbol and amount दिखेगा. Say for example मैं 25,000 लिख रही हूँ, तो rupees का symbol उसके आगे आ जाएगा. If you want to suffix your symbol, you can press yes. If you don't want to suffix, you can omit that. No रख देना है इसको. Okay. Then show amount in millions. अगर आपको लगता है कि आपका transaction millions तक जाएगा या होना चाहिए, it will show. Number of decimal places generally 2 होता है. You can increase it or you can make it 0. Suppose मेरा कोई product है, उसका price है 2500.19 और वो 19.19 मेरे लिए important है, तो I can maintain it. Decimal places आपको दिखाएगा वो. Then at last you have to accept it. Once you are sure कि आपने information proper डाला है, आप इसको Y करके accept कर सकते हैं. जैसे ही आप Y प्रेस करोगे या enter की प्रेस करोगे, आप गेटवे ऑफ टैली में ही आ गए हो. You are getting another window और बटन पैनल के कुछ बटन्स हमारे एक्टिव हो गए. ठीक है. गेटवे ऑफ टैली गिव्स यू वेरियस ऑप्शंस. इस ऑप्शंस को क्या करना है वो हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे. यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ कंपनीज. अब यहाँ पे एक कंपनी आ गया. जो कंपनी बोल्ड में है मींस ये मेरा एक्टिव कंपनी है. अब जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो इस कंपनी से रिकॉर्ड होंगी. बटन पैनल में हम लोग देख सकते हैं शॉर्टकट्स. F1 फॉर सिलेक्ट कंपनी, Alt F1. मैंने जैसे बताया था जो भी अल्फाबेट के नीचे या फंक्शन की के नीचे सिंगल डैश है वो ऑल्ट से प्रेस किया जाएगा. एंड टैली में फंक्शन कीज का यूज बहुत ज्यादा होता है. From F1 to F12, every function key has some activity. Then F2 is used for changing the date and Alt F2 is used for setting the period. अब थोड़ी देर पहले जो मैंने फीचर्स में बात की थी कि say for example I want to view some date of transaction. Suppose मुझे देखना है कि 31 दिसंबर पे क्या किया हुआ था मैंने, तो I can set date. Okay. And period. Period होता है एक range of dates. Say for example I want to see the entries from 1st March to April or May, whatever the day, whatever the period you want to set, you can. Company info में वापस जाना है तो I can press Alt F3. Now I am going in company info menu, reverse. जैसे ही हम लोग Alt F3 प्रेस करेंगे कंपनी इन्फो में आ जाएंगे. सी कंपनी इन्फो के अभी ऑप्शंस आपके बढ़ गए पहले से ज्यादा. वी आर हैविंग शट कंपनी. शट मतलब क्लोज कंपनी. क्रिएट कंपनी हम लोगों ने अभी किया था. Alter will allow you to make the changes. Now say for example मैं shut करती हूँ, तो जैसे ही आप shut कंपनी करेंगे you will be getting list of companies. ये वो लिस्ट होगा जो आपका कंपनीज ओपनड है. अब एट प्रेजेंट मेरी एक ही कंपनी एक्टिव थी, इसके लिए मुझे लिस्ट ऑफ कंपनीज में एक ही कंपनी दिख रही है. आई विल बी प्रेसिंग एंटर. तो अब यहाँ से देखो आपका कंपनी जो है वो क्लोज हो गया. नाउ आई विल बी गोइंग इन सिलेक्ट कंपनी. जैसे हम लोग सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कंपनीज यू हैव क्रिएटेड. ओके. अब एट प्रेजेंट मैंने एक ही कंपनी बनाया था, इसके लिए मुझे एक ही लिस्ट आ रहा है. अगेन आई विल बी सिलेक्टिंग इट, तो ये ओपन हो जाएगा. नाउ गो इन अल्टर. अगेन इट विल गिव यू ऑप्शन.
जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे ना, तो वो लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको देगा कि आपको कौन सी कंपनी को अल्टर करना है। अल्टर एकदम टॉप से शुरू होता है, मीन्स यू कैन अल्टर ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव सेट। क्रिएट कंपनी करते समय हम लोगों ने जितने भी डिटेल्स डाले थे, वॉट एवर डिटेल्स वी हैव इंसर्टेड, आई कैन चेंज इट और आई कैन मॉडिफाई इट वट एवर वैल्यूज आई वॉन्ट टू। से फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लॉन्ग डाल दिया था, तो आई कैन चेंज इट। आफ्टर डूइंग चेंजेस आपको हर एक फील्ड पे ये चीज अलाउेबल होगी। एडिट इज allowed on all the columns of the create company, and again at last you'll be getting accept option. Then you have to press enter or y for escape. अब इससे पीछे आना है, कंपनी इन्फो में हमें जाना है, तो एस्केप की प्रेस करो। एस्केप की से आप पीछे आ जाएंगे, and this is how you will be coming in the gateway of Tally. Moving on to the PPT again, which I have left in between. See, this was the procedure for creating the new company. कंपनी इन्फो अगर आपका डायरेक्टली आ जाता है तो बस, अगर कंपनी इन्फो नहीं आ रहा है तो ऑल्ट F3 प्रेस करके यू हैव टू एक्टिव योर कंपनी इन्फो मेन्यू। उसके अंदर हम लोगों ने ऑप्शन चूज किया था सेलेक्ट क्रिएट कंपनी ऑप्शन। देन इन दैट क्रिएशन विंडो यू हैव टू एंटर ऑल द डिटेल्स, दैट इज पार्टी का डिटेल्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सी दिस वाज द स्क्रीन जो हम लोगों ने अभी देखा था जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे। Then after that procedure for selecting or opening the company जो हम लोगों ने practically करके देखा, you have to press Alt F3 for opening or activating the company info menu. Then you have to go on select company option. Now select company will provide you the list of companies. From that list of companies you have to choose your company which you want to open. Press enter, that is press enter key to open the selected company. तो इस तरह से आपका कंपनी ओपन हो जाएगी। हमारा गेटवे ऑफ कंपनी ऑफ सॉरी कंपनी इन्फो का स्क्रीन था जो हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। आफ्टर दैट प्रोसीजर फॉर शटिंग और अनलोडिंग, दैट इज क्लोजिंग द कंपनी। अगेन यू हैव टू एक्टिव कंपनी इन्फो मेन्यू। इन दैट यू हैव टू सेलेक्ट शट कंपनी ऑप्शन। दिस विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कंपनीज which are opened. अगर एक ही कंपनी ओपन होगा तो एक ही लिस्ट दिखाएगा, अगर मल्टीपल ओपन होगी तो it will give you a list. From that list which company you want to shut, you have to select it and you have to press enter key. And the next was alter. Alter means to make the changes. ये तीन options आपको हर एक में मिलेंगे, display, create and alter. Okay, press Alt F3 to open the company info menu. Then you have to select alter option from company info. Then after that, you have to select the company from the list of companies which you want to alter. Make the required changes in the company information screen and accept it or save the changes. Okay, accept means to save Tally के terms में. Then procedure to delete. अभी आप लोगों ने अगर स्क्रीन पे ध्यान दिया होगा, पहले अगर आप लोगों ने स्क्रीन पे ध्यान दिया होगा ना, तो डिलीट ऑप्शन हमें मिलता नहीं है, कहीं पे भी आपको डिलीट दिखा नहीं होगा। So how to delete? See, company info में जाना है, whatever you want to delete in Tally, you have to open it in alter mode. वो चीज alter mode में open होना चाहिए, फिर वो entry हो, voucher हो या company हो। See, select alter option from company info menu. Select the company from the list of companies you want to delete. And you have to press Alt D. Tally में कुछ भी delete करने के लिए एक ही की यूज होता है, that is Alt plus D. एक साथ से प्रेस करना होता है। Then it will ask you the confirmation कि do you want to really delete it? Then the company will be deleted. Let's do it. Practically देखते हैं इसको। मैं अभी जाऊंगी Alt F3 प्रेस करूंगी company info में। Now I'll be choosing alter option. I'll be opening it in alter mode. Okay, now I'll be pressing Alt D. So Alt D will give you the option delete question mark, yes or no. If you are sure you want to delete, you will be pressing Y. Okay, अब क्योंकि ये कंपनी आप डिलीट कर रहे हैं, ये एक बार आपसे वापस कंफर्मेशन मांगता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन यस। अगर आप श्योर नहीं है तो नो करेंगे। जैसे ही यस प्रेस कर दिया, सिलेक्ट कंपनी में जाके देखो, नो कंपनीज इन डिस्क। ओके, so this is how we can delete it.
कंपनी सिलेक्ट, अगर आप कंपनी डिलीट कर देते हो मींस उसके अंदर जितने भी वाउचर्स, जितने भी लेजर्स, जितनी भी रिपोर्ट्स आपने बनाई है, एवरीथिंग विल बी गेट डिलीटेड. ओके, अगर फिर हम लोगों ने उसका पास्ट में कुछ बैकअप लिया है तो यहाँ से आप बैकअप और रिस्टोर यूज कर सकते हैं. अदरवाइज एक बार डिलीट हो गया तो वापस नहीं आएगा. Here we were. Now buttons on button panel. जैसे मैंने आपको बताया, बटन पैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे टैली में. फर्स्ट ऑप्शन इज F1. डायरेक्टली आप F1 प्रेस करेंगे तो you'll be getting select company option. These are the multiple ways to activating some options. The simplest way was कि आप navigation keys यूज करो, शॉर्टकट कीज यूज करो. शॉर्टकट की मतलब वो की जिसको आप ऑल्ट या कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, या हॉट कीज यूज करो. The another thing is कि you can use function keys also. So F1 will provide you the option for selecting the company. Alt F1 is used for shutting the company. That is by pressing this option, आपका कंपनी जो ओपनड है वो शट हो जाएगा. अगर मल्टीपल कंपनीज ओपनड है तो आपसे लिस्ट पूछ देगा कि which company you want to shut. Then F2 is used for changing a single date, जैसे मैंने बताया था, डेट चेंज करने के लिए यूज होता है. Then Alt F2 is used for setting up the period. Period could be like in month, 3 months, years, whatever. जितना भी आपको पीरियड सेट करना. F3. This will transfer control from one company to other. अब ये किसके लिए यूज होता है? सपोज मेरा 2 कंपनीज ओपन किया हुआ. I have opened 2 companies and I'm working in one company, say company 1, and now I want to switch on to company 2 for doing some entries. तो यहाँ से मैं F3 प्रेस करके अपना कंट्रोल ट्रांसफर कर सकती हूँ from first company to another. Then company info, ये जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकली करके देखा था, Alt F3. Alt F3 option is used for invoking or activating company info menu. Then F11. Now this is used for changing the features of the company, wherever in which you are having different features जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो. देन F12, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन की है जो हम लोग यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के लिए. whenever you want to make configuration, some type of configurations you want to do. Then in Tally, the most important part, अब हमारा बेसिक पार्ट हो गया, that is फॉर्म क्रिएट करना, अल्टर करना, एडिट करना, that is डिलीट करना, एंड क्लोज करना और ओपन करना सीख लिया. अब हम लोग आते हैं ग्रुप्स में. Now groups क्या होते हैं? Groups are the actual heads of accounts. Sorry, groups are the accounting heads in which you can classify different ledgers. Groups are helpful in classifying or identifies the account heads based on their nature. जैसे मशीनरी आप फिक्स्ड एसेट में डालते हैं. ओके, डेटर, क्रेडिटर, ये हमारे ग्रुप्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं. सेकेंड थिंग, प्रेजेंटिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन of some party. Now there are 28 predefined groups in Tally, out of which 15 are primary group and 13 are subgroups. ये प्राइमरी ग्रुप्स आप किसी भी लेजर हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे हम लोग परचेज का लेजर बनाते हैं तो विल बी यूजिंग परचेज अकाउंट्स. सेल्स का बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट. ओके, कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल का अकाउंट, बैंक बनाओगे तो बैंक का अकाउंट, लोन दिया हुआ होगा किसी फॉर्म से तो लोन के ग्रुप में जाएगा वो. इस तरह से यू कैन, जैसे आपका स्टॉक है तो स्टॉक इन हैंड में जाएगा, या स्टॉक आपका करंट एसेट में भी आता है जो आपका करंट ईयर का स्टॉक है. जैसे मशीनरीज हैं वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स में जाती हैं. ओके, दिस इज लाइक whatever the account head, जो भी आप लेजर्स क्रिएट करोगे उसके लिए आपको ग्रुप्स इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग 11th ऑनवर्ड सीखते आए हैं. Again, I am repeating, there are 28 predefined groups, out of which 15 are primary and 13 are subgroups. इसके अलावा भी जो लिस्ट में नहीं है हम लोग ग्रुप्स को क्रिएट भी कर सकते हैं अपने लिए, बट ऑलमोस्ट हमारा इसमें से काम हो जाता है. These are the separate listings. इसको मैंने सेपरेट किया हुआ है, that's it. अब थोड़ा सा ग्रुप्स की तरफ चलते हैं कि किस तरह से ग्रुप्स डिस्प्ले होता है. प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, फिर हम लोग स्टेप्स की ओर जाएंगे. अगेन आई विल बी क्रिएटिंग अ कंपनी. मैंने कंपनी डिलीट कर दिया था, मैं एक कंपनी बनाती हूँ, R.K. Peripherals Limited. Give some address. ओके, स्टेट सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने बताया था, महाराष्ट्र. वट एवर पिन कोड यू वांट टू इंसर्ट.
whatever the details you want to insert. अभी मैं नहीं कर रही हूँ, important चीजें डाल रही हूँ. एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग. Okay. So once you have created the company, you are in gateway of Tally, right? ये हम लोगों ने अभी देखा था. Then उसके बाद अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं. ओके, यहाँ पे वी आर हैविंग ग्रुप्स एंड लेजर्स एज अ ऑप्शन. पहले लेजर्स में जाते हैं, देखते हैं. वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस, क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले. जैसे मैंने बताया था आपको, डिस्प्ले में जाके देखते हैं. सी, बाय डिफॉल्ट टैली गिव्स यू 2 लेजर्स क्रिएटेड, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाकी के लेजर्स हमें बनाने पड़ते हैं. मैं बैक आती हूँ, उसके ऊपर ऑप्शन है ग्रुप, डिस्प्ले. अब सिंगल ग्रुप में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स इस तरह से मिल रहा है. मल्टीपल में जाते हैं हम लोग डिस्प्ले के लिए, ऑल आइटम्स. ये वही लिस्ट है जो मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाया था. ये आपके प्राइमरी ग्रुप्स और ये आपके सब ग्रुप्स. जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो कैपिटल का एक पार्ट है. जैसे बैंक तो लोन्स, लायबिलिटी. इस तरह से लिस्टिंग पूरा आपको इसमें मिला हुआ होगा. इसके अलावा इफ यू वांट टू क्रिएट एनी अदर ग्रुप तो यू कैन आल्सो क्रिएट इट. ओके, एक बार वापस देख लो अच्छी तरह से. ग्रुप्स, सिंगल विल गिव यू सिंगल डिस्प्ले. जैसे देखो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में जा रही हूँ तो इट विल शो यू अ सिंगल ग्रुप. इसका डिस्प्ले है, ये किसको बिलोंग करता है वो दिया हुआ है. अगर हमको सारे ग्रुप्स का लिस्टिंग देखना है, वी वांट टू सी ऑल द लिस्टिंग, कंप्लीट लिस्टिंग, तो वी विल बी प्रेसिंग ऑल आइटम्स. जैसे आप ऑल आइटम्स पे क्लिक करोगे तो वो आपका पूरा लिस्टिंग आपको शो करेगा. Moving on to the PPT again. See, gateway of Tally, accounts info, groups, display under single और multiple. दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं. सिंगल अगर आप चूज करेंगे तो you will be able to view single, and multiple if you will be choosing तो आप multiple options चूज कर सकेंगे. Select all items if you are in multiple groups and you have to press enter key. Okay, this was the list जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था. Okay, then moving on to the ledgers. Now ledgers क्या होते हैं? जैसे आप say for example मैन्युअली जब आप अकाउंट्स करते हो तो सबसे पहले आप जर्नल बनाते हो, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं. देन यू आर क्रिएटिंग प्रोफोर्मास. प्रोफोर्मास क्रिएट करने के बाद उन लेजर को हेड्स देते हो. तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. कंपनी क्रिएट करने के बाद द फर्स्ट थिंग विच यू वांट टू डू इज, विच यू हैव टू डू इज रादर, you have to create ledgers. Ledgers are the books of accounts in which data from transactions recorded in journal are posted and thereby classified and summarized. Ledgers को हम लोग actual heads of accounts भी बोलते हैं. These are very important for voucher entries. Unless and until आप ledgers create नहीं करते हैं तब तक आप voucher entries post नहीं कर सकते. अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, in Tally 2 ledgers are by default created when the user creates a new company. जब आप एक कंपनी क्रिएट करते हो, टैली आपको 2 लेजर बना के देता है. दैट इज कैश का लेजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर. अदर लेजर्स रिक्वायर्ड आर टू बी क्रिएटेड. यू हैव टू क्रिएट दैट इफ यू वांट टू यूज इट. नाउ अभी अगेन हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं. लेजर्स किस तरह से बनते हैं. The one thing is कि आप यहाँ से क्विट चूज करो. The another thing is कि आप एस्केप की प्रेस करो. मैं पूरा एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाती हूँ. अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स. Again here I am having single ledger and multiple ledger. What is the difference between both? Both are giving you same options. Create will create a new ledger for you. Display will show the list of ledgers which are created, and alter will allow you to make the changes. Again इसमें आपको डिलीट नहीं दिखाई दे रहा है. टैली में आपको कहीं पे भी यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो उसको अल्टर मोड में ओपन करके यू हैव टू डिलीट इट. अगेन मल्टीपल लेजर्स. अब मल्टीपल लेजर्स में ना आप सारे लेजर्स एक साथ से बना सकते हो. फॉर एग्जांपल पहले मैं एक सिंगल लेजर क्रिएट करती हूँ. सपोज आई एम क्रिएटिंग सेल्स का लेजर. तो दिस विल बी माय हेडिंग. दैट इज लेजर का नाम सेल्स अकाउंट्स. ये जिस तरह से आप टाइप करेंगे आपके लेजर हेडिंग में आएगा. Now this is giving you the list of groups. Now sales belongs to sales accounts itself. S press करो, sales accounts आ जाएगा. Press enter. Okay. Inventory values affected yes रहता है. Means आगे जाकर हम लोग इसमें से bill generate कर सकते हैं. Okay. Press enter. Opening balance.
अगर आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं. अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो जस्ट यू हैव टू प्रेस एंटर. अब जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया, जब तक मैं इसको सेव नहीं करूंगी एक्सेप्ट करके, तब तक वो मुझे दूसरा लेजर नहीं बनाने देगा. सिंगल लेजर विल अलाउ यू टू क्रिएट लेजर्स वन बाय वन. जैसे मैं यहाँ पे यस प्रेस कर रही हूँ. अब इस विंडो से हमें बाहर आना है तो आई हैव टू प्रेस एस्केप एंड क्विट. ओके, अब हम जाते हैं मल्टीपल लेजर्स में. मल्टीपल लेजर्स में ऑल आइटम्स में एंटर की प्रेस करेंगे. पहला लेजर का नाम सपोज मैं परचेज बनाती हूँ. आई एम गिविंग द नेम एज परचेज अकाउंट्स. नाउ अगेन दिस विल गिव मी द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स. यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप सेलेक्ट किया परचेज अकाउंट. यहाँ पे आपको वो ओपनिंग बैलेंस पूछेगा. अगर हमें प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस शीट दिया हुआ है, इफ आई एम हैविंग सम बैलेंस शीट, तो आई कैन यूज दैट, अदरवाइज लीव दैट. देन उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे मशीनरी का लेजर बना रही. Whatever the name you want to set, you can set. Press enter. This will be under fixed assets. Enter. इस तरह से you can create multiple ledgers of your choice. Once you are done with creating the ledger, press enter. तो ये क्या करेगा, जितने आपने ledgers बनाए हैं, Y प्रेस करने के बाद एक साथ से वो सारे ledgers create हो जाएंगे. अब आप डिस्प्ले करके देखिए. ऑल आइटम्स में जाना है. ये सारे इतनी जो लिस्ट दिखाई दे रही है वो नहीं है. तो अभी मुझे 5 लेजर्स मिलेंगे. कैश वॉज ऑलरेडी क्रिएटेड, प्रॉफिट एंड लॉस वॉज ऑलरेडी क्रिएटेड, सेल्स मैंने सिंगल लेजर में बनाया था, परचेज एंड मशीनरी मैंने बना लिया. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द लेजर्स. नाउ द सेकेंड थिंग वॉज डिस्प्ले, जो हम लोगों ने करके देखा. दिस वन, दिस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर्स विच यू आर हैविंग. डिस्प्ले विल जस्ट ओनली अलाउ यू टू व्यू. आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू एडिट इट, सपोज मुझे कुछ एडिट करना है, तो आई विल बी गोइंग इन अल्टर ऑप्शन. ओके, अल्टर में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने गलती से इधर मशीनरी दे दिया था, कुछ और नाम चाहिए, से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, तो आई विल बी चेंजिंग इट. प्रेस एंटर. or you can use Control A to accept. Control A is a shortcut key for accepting. पूरा enter नीचे आने की बजाय, accept करने की बजाय Control A भी press कर सकते हैं. Now suppose I want to delete this computer का ledger. Alter mode में open करेंगे, press Alt D. Okay, it will give you the prompt. एक prompt आ जाएगा, एक window आ जाएगा, delete yes or no. If you will be pressing Y, तो आपका ledger delete हो जाएगा. If you are pressing no, तो आप वापस आ जाओगे इस विंडो में. सपोज मैं Y प्रेस करती हूँ. See, my ledger is deleted. अब यहाँ पे वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मुझसे उसने नहीं पूछा. कंपनी डिलीट करते समय it will prompt you 2 times. Are you sure? Because कंपनी डिलीट करना means you are deleting everything related to that particular form. Escape की प्रेस करके बाहर आएंगे in Gateway of Tally. So these were the steps. Procedure for creating a ledger. From Gateway of Tally, you have to select Accounts Info. Accounts Info में Ledgers. Ledgers के अंदर you are having create, single or multiple you can use. Type the name of the ledger. Select appropriate group. That is किस group को, अगर यहाँ पे group wrong हो गया तो आपका ledger entries के time पे problem होगा. See, the most important thing, ledger name should be unique. Tally does not allow duplicate ledger names in a single company. यूनिक नाम से हमें उससे क्रिएट करना होता है. देन द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर प्रोसीजर फॉर altering, that is making the changes. From accounts info, ledgers, alter. You have to select a particular ledger from the list which you want to alter, make the required or desired changes in the ledger, and then accept it. Then after that, procedure for displaying the ledger. From Gateway of Tally, Accounts Info, Ledgers, Display under multiple option. हमेशा display जब आप करते हैं ना, फिर वो चाहे group हो या ledger हो, you should choose multiple so that it will give you the complete list of ledgers. Then उसके बाद select all the items, that is all items option select करना है in the group field, and you will be able to view that. आपके ledger listing आ रही है enter की press करने के बाद. यहाँ पे ये important है कि when you are displaying under multiple groups, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको चूज करना है
all items. Then procedure to delete. From accounts info, again from gateway of tally, accounts info, ledgers, you have to use alter, select a particular ledger from the list, press Alt D to delete the selected ledger. हमेशा याद रखना, Alt D is used for deleting and Alt P is used for printing. Okay, Control P इसमें use नहीं होता, Control का use tally में बहुत कम होता. Then moving on to the vouchers. Which type of vouchers you use? Basically, vouchers का use क्या होता है? Vouchers are used for recording your day-to-day transactions. Okay. Now in Tally, we are having several predefined vouchers जो हम लोग different type of transactions के लिए use करते हैं. कौन से vouchers use करते हैं वो हम देखेंगे. Also, we are having the facility to modify the vouchers. See, the predefined voucher types are contra. Contra vouchers are used to indicate the transfer funds from when you deposit cash into bank. When you deposit bank, मतलब bank account और bank account use किया, cash to bank और cash to cash. Okay. Like say for example, पहले हम लोग एक इसका shortcut देखते हैं. To activate contra vouchers, that is the type of the contra voucher active करने के लिए, the shortcut key which you will be using is F4 function key, or you can click on F4 contra button from the button panel. Button panel में आपको सारा list मिलेगा. Let's move on to the practical part, that is ये वाला part. यहाँ पे आ जाती हूँ मैं. Now the first part was creating the company. एक बार थोड़ा सा short में देख लेते हैं. Alt F3 press करके हम लोग company info में से company create किए थे. Once you are creating the company, उसके बाद the second part was you have created the ledgers. Ledgers में जा करके हम लोगों ने कुछ ledgers create किए. Okay. Now suppose I want to post some transaction. एक इसमें बैंक का लेजर भी मैं बना देती हूँ एंट्रीज पोस्ट करने के लिए. बैंक अकाउंट विल बी अंडर बैंक अकाउंट इटसेल्फ, ये हमारा ग्रुप है. देन अगेन यहाँ पे आपको बैंक का नाम, ये सारे डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे एंड प्रेस एक्सेप्ट. एस्केप की प्रेस करेंगे. Now, for posting the vouchers, we are having the heading as accounting voucher under transaction. जैसे आप accounting voucher में जाते हैं, पहले आपको नेचर पता होना चाहिए आपके ट्रांजैक्शन का. बटन पैनल में देखो आपके सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए हैं अभी. कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, अब ये सारा हम समझेंगे, फिर इसकी तरफ एक एंट्री पास करेंगे. सो फर्स्ट वाउचर वाज कॉन्ट्रा, जिसके लिए शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं F4. लाइक सपोज यू हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. ये मैंने इसका एक एग्जांपल भी डाला है. सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन मैंने नीचे डाला है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. दिस इज द लुक ऑफ द कॉन्ट्रा वाउचर जो हम लोग अभी करके देखते हैं. सपोज कैश टू बैंक की एंट्री डाल दूं, तो यहाँ से मैं पहले F4 की प्रेस करके कॉन्ट्रा सेलेक्ट करूंगी. सी, नाउ हियर द डेट इज 1 अप्रैल, आई वांट 1 मई, तो आई विल बी चूजिंग F2 फ्रॉम द कीबोर्ड. F2 की प्रेस करेंगे तो मेरा डेट चेंज करने का ऑप्शन मुझे मिलेगा. बाय डिफॉल्ट वो डेट में +1 करता है, मतलब 1 अप्रैल वाज द डेट, अभी मुझे 2 अप्रैल दिख रहा है. अगर ये डेट मुझे यूज करनी है, रिटेन करनी है, तो जस्ट आई विल बी प्रेसिंग एंटर. नहीं, अगर मुझे दूसरा डेट चाहिए तो वो डेट में टाइप करूंगी पूरा. एंटर की प्रेस करने के बाद यू विल बी एबल टू सी टॉप में आपका डेट चेंज हो जाएगा. नाउ हियर यू आर गेटिंग अकाउंट एज ऑप्शन. ओके, यहाँ पे या तो कैश इफेक्ट होता है या तो बैंक. ठीक, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सपोज मैं यहाँ पे 50,000 डालती हूँ. नाउ दिस विल गिव यू द बैंक एलोकेशन स्टेटमेंट, लाइक चेक से किया है या क्या किया. ओके, ऑटोमेटिकली वो डेबिट क्रेडिट कर लेगा. ये आपका नरेशन का एरिया है जहाँ पे आप नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, प्रेस एंटर. वंस यू आर सेटिस्फाइड विथ योर एंट्री यू कैन प्रेस यस. अगर आपको लगता है नहीं एंट्री में कुछ मिस्टेक है तो आप नो करके पीछे भी आ सकते हो एंड यू कैन मेक द चेंजेस. सपोज मैं अभी एंट्री को उल्टा कर रही हूँ, तो whatever changes you want to do you can make the changes. Press enter key and once you are sure press yes. alter कैसे करते हैं एंट्री को हम आगे सीखेंगे. तो this was the contra voucher. After that the next is payment voucher. Payment voucher records all the type of payment made through bank or cash.
जहां पे भी आपने पैसा पे किया है, either by check or by cash. For example, if you have paid salaries of rupees 75,000. Okay, to activate payment voucher type, on the entry screen you have to press F5 function key. Okay, F5 function key से आपका payment voucher active होता है. This is the entry example जो हम लोगों ने देखा था, salary account debit to cash account. ये हमारे पेमेंट वाउचर का लुक. अब हम लोग आ जाते हैं, यही पेमेंट की एंट्री पोस्ट करते हैं. नाउ आई हैव टू सिलेक्ट पेमेंट. नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैंने ना सैलरी का अकाउंट नहीं बनाया, लेजर नहीं बनाया, तो यहाँ से बाहर आना नॉट कंपलसरी कि हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाएं, उसके बाद हम लोग वहां पे क्रिएट करें. यहाँ पे आप Alt C प्रेस कर सकते हैं. इन बिटवीन द वाउचर एंट्रीज लेजर क्रिएशन का स्क्रीन अगर हमें चाहिए, सपोज मैं कोई लेजर बनाना भूल गई हूँ, तो Alt C में प्रेस करूंगी एंड आई विल बी क्रिएटिंग द लेजर रिक्वायर्ड. सैलरी विल बी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ये हमारे फर्म का एक्सपेंस है. प्रेस एंटर, प्रेस एक्सेप्ट. अब मेरा लेजर बन गया. नाउ माय एंट्री वाज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, अकाउंट हेडिंग में या तो कैश रिफ्लेक्ट होता है या तो बैंक. सैलरी पेड बाय चेक होता, ओके, तो वी विल बी सिलेक्टिंग बैंक. सैलरी पेड बाय कैश है तो कैश, उसका करस्पॉन्डिंग लेजर. अभी कैश रिफ्लेक्ट चला गया. सैलरी एस प्रेस करोगे, इन लिस्ट ऑफ सैलरीज इन लिस्ट ऑफ लेजर्स यू विल बी गेटिंग सैलरी अकाउंट. ओके, अगर सपोज यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स या तो आपने सैलरी अकाउंट नहीं बनाया है या तो उसका ग्रुप रॉन्ग दे दिया है. एंटर की प्रेस करेंगे, वी विल बी पुटिंग द अमाउंट 25,000 सपोज. प्रेस एंटर, नरेशन डालेंगे, सैलरी पेड, press enter, press accept. Okay, this is how we will be using payment voucher. After that receipt voucher. Next is receipt voucher. Whenever you are receiving something either by cash or by bank, amount received from customers, capital introduced to the business, loan taken, loans and advances refunded, commission received, rent received, dividend received, whatever you have received, the term deposits, amount received in the form of cash or bank, for that you will be using receipt voucher. To activate receipt voucher, the shortcut key used is F6. F6 function की यूज किया जाता है. Okay, now say for example इसी को ही हम लोग एक एंट्री में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे रिसिप्ट. Okay, now I want commission का ledger, so again I'll be pressing Alt C. यहाँ पे मैं बना रही हूँ. I'm creating the ledger. Commission received will be under indirect income. Ledger heads groups आपको properly पता होनी चाहिए. Press enter. Now you have received the commission in the form of cash or bank. You have to select that. Suppose मुझे check receive हुआ है, तो now I'll be using bank. इसका corresponding ledger नीचे C press करो. When you'll be pressing C, first alphabet of that particular ledger, okay, तो वो ledger आपको list of ledgers में दिखेगा. Choose that. Write the amount. Press enter. Write the narration. Press enter, press accept. Okay, this is how we will be using receipt voucher. This was the entry. This was the receipt voucher का look जो हम लोगों ने भी practically देखा. Then the next is sales voucher. Whenever the company sells goods on credit or cash, sales voucher is used. So sales voucher is used to record all the sales transactions of the company. जैसे यहाँ पे example में I've mentioned one example. Goods sold to Narendra and Company on credit worth rupees 10,000. Sales voucher को active करने के लिए we are having the function key as F8. This is the look of my sales voucher. Okay, moving on to the purchase voucher.
Whenever the company buys or purchases goods on credit or cash, purchase voucher is used. So purchase voucher is used to record all the purchase transactions of the company. For example, goods purchased from Ramen company, whatever the amount is. For activating the purchase voucher, you are having shortcut key as F9. F9 function key, not shortcut key. This is the look of your sales voucher or purchase voucher. Journal. Now journal voucher is used for all the rectification and adjustment entries. Say for example, goods burned by fire. Okay, तो ये सारी एंट्रीज हमारी इसमें जाती है जर्नल में. जर्नल में 3 टाइप्स होते हैं, जर्नल, क्रेडिट नोट वाउचर एंड डेबिट नोट वाउचर. Now first of all, journal. This voucher is used for all the adjustment between two ledgers. Journal are the adjustment entries which do not involve cash account or bank account. Like say for example, depreciation on machinery. Okay, journal. For activating the journal voucher, you have to use function key, that is F7. Now the entry will be depreciation account debit to machinery account, and this is your look, that is journal voucher looks like this. Then credit note. Now credit note is a document issued to a party stating that you are crediting their accounts in your books of accounts for the stated reason. Like say for example, sales return. If I'm having any sales return, so I'll be issuing credit note. Okay, credit note के लिए भी हम लोग journally. Now activating the credit note, there is a shortcut key as Control F8. Control button comparatively बहुत कम use होता है, but for credit note we are having Control F8. Like सेल्स रिटर्न टू नारायण एंड कंपनी, एक एग्जांपल डाला है मैंने. एंट्री ये जर्नल के फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे आपको अकाउंट हेड में जर्नल ही मिलेगा. डेबिट नोट. नाउ डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट which issued to a party stating that you are debiting their account in your books of accounts for the stated reason. Like say for example, you use in purchase return. So जैसे goods returned to Ram and company worth ₹1,000. So for activating your debit note, the shortcut key is Control plus F9. Control F9 you have to press from keyboard, or you can click from button panel. This is the example. Ram and company account debit to purchase return, and again the look of your journal voucher. No, for after your entries, how to view all the entries. पहले वो देखेंगे, फिर we'll be coming on to the purchase orders and all. You are having an option as display in Gateway of Tally. Display daybook. Daybook will show you all the transactions which you have done. This is a detailed view. Okay. Now daybook आपको entries कहाँ से दिखा रहा है? मैंने date change किया था, 1 मई किया था, और उसके बाद मैंने date change नहीं किया है. Okay. तो सपोज अगर मैं Alt F2 प्रेस कर रही हूँ, या F2 बटन पैनल पे क्लिक कर रहे हैं, 1/4/2021, अगर 1/4 पे कोई एंट्री पोस्ट की हुई होती थी तो वो सारी लिस्टिंग आ जाती थी. दिस वाज द, दैट इज Alt F1 प्रेस करेंगे. दिस इज माय कंडेंस्ड मोड, जिसमें आपको एंट्री दिखती है, वाउचर टाइप दिखता है और अमाउंट. इफ यू वांट अ डिटेल व्यू ऑफ दैट, यू कैन क्लिक ऑन बटन पैनल और यू कैन प्रेस Alt F1. सपोज यू वांट टू एडिट सम एंट्री, आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई है. ओके, तो प्रेस एंटर की, सिलेक्ट दैट एंट्री एंड प्रेस एंटर की. यू विल बी एबल टू व्यू दैट. यहाँ पे हर एक फील्ड एडिटेबल है. नाउ से फॉर एग्जांपल इधर बैंक चाहिए था मुझे, मैंने गलती से कैश डाल दिया, तो नाउ आई कैन एडिट इट. प्रेस एंटर, और डायरेक्टली इफ यू आर श्योर आगे कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो यू कैन यूज Control A टू एक्सेप्ट. Control A is the shortcut key for accepting the window. Again you will be in the same daybook part. Now suppose you want to delete the entry. ये वाला एंट्री मुझे डिलीट करना है, डबल हो गया या रॉन्ग हो गया. ओपन इट ऑन ऑल्टर मोड. ये ऑल्टर मोड ही है हमारा, Alt D. Again it will prompt you, delete question mark, yes and no. If you're sure you want to delete, you press yes. If you're not sure you want it back, so you can go for no. अब मैंने yes प्रेस कर दिया था तो मेरी एंट्रीज डिलीट हो गई. Now escape की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आएंगे. Now in reports you are having balance sheet as an option. जो भी एंट्रीज आपने पोस्ट की होंगी उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखेगा.
From here also you can move on to profit and loss account, or from reports window you can go in profit and loss account. After that, in display you are having various options like trial balance. यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस व्यू कर सकते हैं. डे बुक हम लोगों ने किया था. देन अकाउंट्स बुक, कैश एंड बैंक बुक आप यहाँ से व्यू कर सकते हो. Whatever the reports you want, you will be getting in accounts books, you will be getting in display menu, also you will be getting in report section जो हमारे common reports हैं, balance sheet and profit and loss account. This is how the basics of tally works. Moving on to the next part, to generate a bill, purchase order. Okay, purchase order processing is the process of placing order with the suppliers for a purchase to be made from them. Then you can create a sales order also. This is related to inventory part. Sales order processing is the process of receiving orders from customers for the purpose of selling. Purchase order and sales order processing helps you in planning the production process accordingly. Okay, then simple invoice generation, जिसको हम लोग normal term में चालान भी बोलते हैं. When a sales transaction is made, documents detailing the transaction, that is item name, what you have purchased, what you have sold, tax if applicable, etc., has to be given to the buyer or the debtor as a proof of purchase by him. This document is called as an invoice or a bill or a cash memo भी हम लोग इसको बोलते हैं. So you have to enable the features for this. You have to press F11 function key. Now see, practically हम लोग इसको करके देखते हैं. F11 features हमारा button panel में भी हमें मिल जाएगा. You are having option as accounting features as well as inventory features. See, enable purchase order processing. You have to enable the purchase order if you want to make it active. Similarly, enable sales order processing. Why press करके इसको enable करेंगे? If you are having go downs from where you want to purchase or sell, go downs enable कर सकते हैं हम लोग. Invoicing is by default yes, bill generation खुद ही हो जाता है. इसके अलावा भी अगर आपको कोई फीचर्स एक्टिव करने हैं इसमें तो हम लोग कर सकते हैं. For purchase order and sales order specifically, you have to enable this feature. Enable purchase order processing, enable sales order processing. If you're sure, once you are done with the configuration settings, you can accept it. Control A और Y पे press करके आप accept कर सकते हो. Company features में you are having 3 options: accounting features, inventory features. This option is used for activating the tax, that is GST or something. So these were the steps जो हम लोगों ने अभी किया. Go to inventory features, type yes in the fields, that is allow purchase order processing, allow sales order processing, allow invoicing is default yes. If you want to active your go downs also, maintain multiple go downs yes करेंगे, आपका go down feature भी active हो जाता है, and you have to accept it. Now creating a purchase order. See, inventory vouchers from gateway of tally, you are having the option as, जैसे आप एक्टिव करेंगे, you will be getting option as inventory vouchers. Inventory vouchers में यहाँ पे आपको order vouchers मिलेंगे. Sales order, purchase order, accordingly you can choose. Purchase order बनाना है तो आप यहाँ से purchase order select करेंगे. Sales order बनाना है तो sales order. क्योंकि मैंने दोनों features एक्टिव किए हैं, दोनों parts मुझे मिल जाएंगे. Alt F4 is used for enabling purchase order, and Alt F5 is used for enabling sales order. ये दोनों साथ में मैं बता रही हूँ, PowerPoint presentation में मेरा अलग दिया हुआ है. See, Alt F4 is used for activating your purchase order. Enter all the details of the product and the party. You have to create the inventories, you have to create the parties, your debtors, your creditors. Accordingly आपको उसमें enter करना है and accept. See, this is how the purchase order is created. These are my stock items which I have generated. Okay, this is my party का name जिससे मैं purchase कर रही हूँ. Purchase ledger will be affected, of course. This is your date button, quantity, rate, amount. Similarly, for creating the sales order, gateway of tally, inventory vouchers, you have to use Alt F5 for sales order. Enter all the details of the product and the party and accept it. This is a look of your sales order. जिस पार्टी से आप सेल कर रहे हैं
उपाधि का नाम, sales ledger effect होगा. If you are having these are the stock items which you are selling. If you are having any freight charges or other charges, वो आप इसमें implement कर सकते हैं. This will give you the total. These charges will be added in the bill, and accordingly your bill will be generated. This is your invoice, general invoice, normal invoice. Okay. Then if you want to alter it from gateway of tally, display, you will be getting everything in display. The simplest method is go in display. Daybook will show you current date ka entries. Okay. From that, if you want to select the period, Alt F2 press karke we have to select the period. Otherwise, if you are using the current date, select the proper purchase or sales order or invoice from the list. Make the desired changes, whatever you are having, and accept it. Printing. Display, daybook, select open, select and open that particular bill. Press Alt P. जैसे मैंने पहले भी बताया, Tally में if you want to print anything, you have to press Alt P. And if you want to delete anything, you can press Alt D. You'll be getting a alert box for printing. See, you have to press yes or you have to click with the mouse pointer to print that particular same bill. For deleting, again open it in alter mode. Display always give you alter mode. Press Alt D function key from the keyboard. Type yes in the delete box. Y press करेंगे आपका वो particular bill या जो भी आप delete करना चाहते हो delete हो जाएगा. And this was the view जो हम लोग ने पहले देखा. Trial balance. Trial balance is prepared for checking the arithmetical accuracy of recording transaction under double entry system. It is used to find out the errors if any. Just daybook में आपको जाना है, gateway of tally, display, trial balance. You have to press Alt F1. Alt F1 function की आपका हर जगह active होगा for displaying in detail view. This is the detail view of your trial balance. Again, you are having print button over there. Alt P press करेंगे या print button पे click करेंगे आपका report print हो जाएगा. Similarly, you can print profit and loss account, which is created. If you want to see in detail view, you have to use Alt F1. From gateway of tally, you are directly having the option of profit and loss account. No need to go in display for profit and loss account and balance sheet. This was the look of profit and loss account जो हम लोगों ने पहले देखा. उसमें मैंने कुछ एंट्रीज कम ही डाली थी, इसके लिए बहुत सारा नहीं आना था. ये मेरा स्क्रीनशॉट डाला हुआ है यहाँ पे. Then balance sheet. Balance sheet is showing the statement of all financial position of a business on a particular date. It is a statement of assets and liabilities, as you know. It is not a ledger account. In balance sheet, debit total always matches with credit side total due to double entry system. Again, these reports are generated or prepared automatically. हमें कुछ बनाना नहीं पड़ता है. Just you have to post on the entries. Then procedure to display from gateway of tally, directly you are having the option as balance sheet. If you want to view in detail view, press Alt F1. Okay, this was the view of your balance sheet report. Now, these are some of the shortcut keys which you can use. जो हम लोगों ने अभी throughout the session देखी. Alt F2 for changing the date, for setting the period, you can say. Alt F3 used for activating company info menu. For Alt F4, for say purchase order, Alt F4, and for sales order, Alt F5. Anything you want to delete, Alt D. If you want to create a new ledger in the voucher entry screen in between, press Alt C. To cancel the voucher entry, press Alt X. Duplicate voucher entry अगर बनानी है तो Alt 2, Control R to repeat the narration. इस तरह से we are having multiple shortcut keys and function keys. ये मैंने कुछ selected function keys डाली हैं जो हम लोग regularly whenever we are practicing tally, ये keys हम लोग बहुत बार use करते हैं. Now moving on to the some little concepts of GST. GST stands for Goods and Services Tax. Now it was the France was the first country
to implement GST in 1954. GST is indirect tax which has replaced many of the taxes in India. In India, it was implemented from 1st July 2017. Now, it is also called as One Nation, One Tax, One Market. Now, for registration, you are getting a GSTI number, Goods and Services number. Registration number हमें मिलता है. Is a registration number allotted to every registered dealer which has registered under GST Act. It is a 15-digit PAN-based registered number, जिसका structure मैंने नीचे डाला है. First 2 digits are for our state code. In center, you are having permanent account number. Then उसके बाद entity, PAN holder of the state, that is the sequence of the registration. Z is by default and checksum digits was the last number. Now, how the taxes is imposed. GST is bifurcated into 2 parts. Intrastate, that is within state, and interstate within other states. Now, if our transactions, purchase या sale, जो भी हम कर रहे हैं, अगर within state है, same state का है, तो CGST and SGST, central tax and state tax we have to pay or charge. If your transactions is with other state, then IGST is implemented, जिसका मैंने bifurcation table डाला है, details. CGST is a tax name, Central Goods and Services Tax, which is imposed on intrastate supply of goods or services, which is collected by central government. For example, Mumbai to Pune, that is within Maharashtra to Maharashtra. Again, SGST be same, intrastate supply of goods and services, which is collected by state government. Satara to Nasik, that is within Maharashtra to Maharashtra. IGST, when you are changing the state, that is interstate supply or import of goods or services, which is collected by the central government. That is, say, for example, Maharashtra to Karnataka, and so on. These were the basics of tally. Much more things we are having in tally, which we'll be learning in further sessions, I think. I hope you got understand or some doubts anyone is having, please let me know. Yes, thank you, Professor Lakshmi Jeswani, for sharing your knowledge and making participants familiar with Tally. I now request Professor Nishika Ahuja to ask queries raised by participants in the chat box. Good afternoon, one and all. This is Professor Nishika Ahuja here. First of all, congratulations, ma'am, for such a knowledgeable session on Tally. Even I got to know a lot of information in this session. I would like to put forward the queries given by our students in the chat box. Yes, ma'am. The first question put by one of the students is, ma'am, how to install Tally ERP 9 in laptop? Okay. We have to download it from the websites. Online it is available. After that, you have to paste it in your drive, download. This is a setup file which you'll be getting on the website. And just you have to execute the setup. Right click and run as an administrator or install button you'll be getting. It is a very simple installation. Just click on next, and you'll be getting finish. जैसे आप finish कर देंगे, तो you'll be getting a shortcut as Tally ERP 9. You have to search on the web. There are various websites which gives you the free version of it. That is, you have to use the free version. जब हम open करते हैं Tally का जो हम लोगों ने first screen देखा था, I guess सब लोगों ने ध्यान से देखा. मैं इसको वापस open करती हूँ. This is the official version. Just I have used the educational mode because मैंने इसको purchase नहीं किया हुआ है. मैं educational mode use कर रही हूँ. So you have to use, if you want to active your license, यहाँ से आप active करेंगे. You have to pay, go for payment. Payment gate पे आ जाएगा. Then you will be getting the activation. Otherwise, you can use educational mode and you can at least learn it easily.
Okay, another question, ma'am, is can we use Tally ERP9 in a mobile phone? Mobile phone, it is very difficult. I have not tried, but it will not give a proper look, I think. We have to just test. And more is, what is the difference between Tally ERP9 and Tally Prime Advance? It is having many more features. Prime Advanced contains many more features than ERP9. Generally, in market, professionals use Prime version because they are getting many facilities related to GSTs and other types of taxes and all. I guess that's it, ma'am. These were the questions put it forward by the students. Thank you so much. Now I call upon Professor Shruti Kumar to propose the vote of thanks. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon to everyone. I consider it as a privilege to express my hearty vote of thanks to all the dignitaries present in this lecture. On behalf of Seva Sadan's R.K.Talreja College, I would like to thank our principal, vice principal, head of department, our resource person, Mrs. Lakshmi Jeswani, for explaining to us about the use of Tally as a tool for accounting. It was really helpful. We came to know about the basics of accounting, basics of Tally, company creation, groups, vouchers, and many more things. It was definitely useful for the students, and it was a wonderful session. Thank you, ma'am. I would also like to thank our organizing team, technical team, volunteers, and our participants whose presence has made this webinar, or you can say our lecture, a great success. I would also request all the participants to attend the lecture tomorrow, which will help them to gain knowledge about the basics of income tax and GST. Thank you so much. Over to you, Sangeeta ma'am. Yes, all the students are requested to fill up the feedback form. Link is shared in the group. Please fill up feedback form.